my dear students, I'm so proud of you. You have stayed with me till the last leg of this learning journey, that is grammar revision crash course. And today we are starting with a very important topic, which is exam oriented. And many students lose marks here, but not you, I'm sure, because you are learning it with me. So today's topic, which we are starting with, is called direct and indirect speech. We are going to understand narration in step by step clarity as we make a house brick by brick, same as with grammar, rule by rule, and concepts become clear. So today we are understanding what is narration. First of all, narration, direct and indirect speech. So आप अपनी जिंदगी में ऐसे sentences अक्सर बोलते हो, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज पढ़ाई नहीं करना चाहती, आई विल मीट यू टुमारो, बोलते हो ना ऐसे सेंटेंसेस. दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच. जो आपने अपने मुंह से शब्द बोले वो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. लेकिन यही वर्ड्स जब मैं बोलूंगी और मैं बोलूंगी कि उसने ऐसे कहा कि वो आज खाना नहीं खाएगी, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी. दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. दिस इज ऑल व्हाट इट इज. जब आपके मुंह से निकले वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट स्पीच होती है, लेकिन उन वर्ड्स को जब हम चेंज करेंगे, दूसरा जना उसको एक्सप्लेन करेगा, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. और यहाँ इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम वन बाय वन समझने वाले हैं. सो टू स्टार्ट विद, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच. वन, डायरेक्ट स्पीच. द सेकेंड, इनडायरेक्ट स्पीच. How will we understand which is direct speech and which is indirect speech? Inverted commas. That is the main clue for you to understand. If anybody's words are written within the commas, inverted commas, that is direct speech. And when you change that, in place of inverted commas, you will use that word that. That means you are using your own words, and that is called indirect speech. So let us understand this one example. Ravi said, I am hungry. Simple. Ravi said, comma, inverted commas, and this sentence is written within the inverted commas. I am hungry. ये रवि के अपने कहे हुए वर्ड्स थे, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. अब इसको हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो जाएंगे और सेंटेंस ऐसे बनेगा, रवि सेड दैट ही वाज हंग्री. ये वर्ड्स का फॉर्मेशन चेंज हो गया. याद रखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में दो मेन डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे. इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो गए. इसके अलावा जो इंटरनल सेंटेंस है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड दैट आई एम हंग्री. वर्ड एम है यहाँ पे. अब इसको जब आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया, उसका मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगी कि क्यों हुआ, पर पहले अभी समझिए. रवि सेड आई एम हंग्री, ये चेंज होके हो जाएगा रवि सेड दैट ही वाज हंग्री. एम की जगह यहाँ वॉज आ गया. क्यों आ गया ये मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगी. लेकिन आज हम सिर्फ दो चीजों को ध्यान से समझ रहे हैं. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, उसकी लुक्स कैसी हैं. व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, उसकी लुक्स कैसी हैं. नोटिस करने वाली बात है, मीनिंग डज नॉट चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच. Formation of words and structure of tenses, that changes. This is all about direct to indirect speech, and tomorrow we are going to go into detail in understanding what rules are applied for changing tenses in the indirect speech. Remember, this is one of the most difficult subject according to students' understanding. Why? Because this is a compulsory examination question. In generally all the exams you are going to get this question. Very scoring because the one sentence means 1 mark, but generally students make mistake. Why? Because they don't have the clarity step by step. Stay with me, share it with your friends if you want them also to get good marks, and don't forget to ask me if you want to understand it in any other way. With that, love from my side.